Hi everyone, today we'll discuss a term pseudo force. Before actually discussing pseudo force, we need to know what are frame of references. There are two types of frame of reference actually. One is inertial and second one is non-inertial frame of reference. Inertial frame of references are non-accelerating frame of references, whereas non-inertial frame of references are accelerating frame of references. If we talk about Newton's laws, they are only valid in inertial frame of references. So in non-inertial frame of references, Newton's laws are not valid. In order to validate Newton's laws in a non-inertial frame of references, we need to consider an additional force that is called as pseudo force. This force does not exist in practice. To validate Newton's laws on paper, we consider this extra mathematical term, and that is pseudo force. So what the formula for pseudo force is, we can write the formula for pseudo force as Fp is equal to minus m times of A, where this m is the mass of the object. That means जो under examination होगा object, it is the mass of that object. Similarly, this acceleration is the acceleration of frame of reference. Which type of frame of reference? Non-inertial frame of reference. So you need to consider a force, that is pseudo force, on the object, and that force magnitude is m times A in the direction opposite to acceleration of frame of references. Okay. Say for example, there are two types of frame of references. One is man standing on the ground, so it is at rest, inertial frame of reference. Second one is man inside an elevator that is going down with acceleration 10 meter per second square. So we will try to find the tension in the string with respect to both the observers. Okay. So first of all, we will solve the with respect to observer 1. Observer 1 is sitting on the ground, that means it's at rest, so its inertial frame of reference. Newton's laws are valid as they are. See, अगर ये जो ऑब्जर्वर होगा, जब भी इस मास को देखेगा, मास का वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन, उस वेट के कारण ये ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, ऊपर से रस्सी टाइट होगी तो उसमें टेंशन डेवलप होगा T. सिंस इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मास रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो इस ऑब्जर्वर को देखने को क्या मिलेगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन. ओके. सेम अगर हम इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे वी नीड टू कंसिडर एन एक्स्ट्रा टर्म दैट इज स्यूडो फोर्स. तो जब आप इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, पहली बात जब ये नीचे आएगा तो इसको लगेगा कि जो मास है दैट इज गोइंग up with an acceleration of 10 meter per second square. Okay, so we need to consider additional term that is pseudo force. तो pseudo force लगेगा ऊपर की तरफ एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होगा that will be m which is 2 into a का वैल्यू is 10, so it will be 2 into 10 that is 20 Newton. Okay, now we can apply Newton's laws on that 2 kg block because we have applied pseudo force, we have validated Newton's laws in non-inertial frame of references. So now if I draw the FBD of 2 kg block, it will be like this. So block is going up with 10 meter per second square, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन प्लस 20 न्यूटन. So if I apply Newton's laws, net force will be upwards and that will be T plus 20 minus 20 is equal to m into a, that is 2 into 10. So plus 20 minus 20 cancel, टेंशन का जो वैल्यू आया that is 20 न्यूटन. सो जब हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तब भी टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तब भी टेंशन का न्यूटन 20 न्यूटन. सो जब भी आप न्यूटन्स लॉज अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू नीड टू ऑलवेज कंसिडर एन एडिशनल फोर्स दैट इज स्यूडो फोर्स, और उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी m टाइम्स ऑफ a, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, a is the acceleration of the observer, और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू द acceleration of the observer. थैंक यू.